It is working? Yes, sir. Okay. Thank you. So, good morning, everyone. Today we are starting we have kept a session on the much relevant topic for all of us, and that is Companies Amendment Act 2020. Though nonetheless, 2020 is a year where we are expecting a lot of new things. We have already witnessed a lot of new things, something bad, something new. So though, yes, pandemic COVID also started during 2020, and thereafter a lot of disaster continue to happen. So people do say that 2020 is a year of, you can say, doldrum. But there are some good things, which is again, like we have got the Companies Amendment Act 2020. So today our deliberation is on the Companies Act 2020. We will discuss in short what are the key highlights, what are the key takeaways in this Amendment Act, what are the things that we need to know under the Amendment Act. Before I start, let me just in short brief you that prior to this Amendment Act, we all know our code, the Companies Act 1956, was changed almost after 5 decades into a new Companies Act 2013, means Companies Act 2013. So once the Companies Act 2013 has come into the picture, thereafter there were a lot of hiccups which didn't permit the corporates to work smoothly. And the main intention of the Companies Act 2013 is to ensure that the corporates do work in a manner whereby more and more businesses are promoted. That was the main reason to replace the Companies Act 1956 with the Act 2013. Now, post 2013, the changes continue to come. Why there was a change need to come? Why all this keep coming? The reason was, the one primary reason was to allow the ease of doing business. Allow ease of doing business. What does it mean, sir? It means whenever there were some practical issues in implementing any of the provisions of the Act, smoothing the Act in such a way that the next step becomes very easy for the corporates, and that is called ease of doing business. So don't go by the impression that 2020 is bringing some major change. It doesn't. It brings only the changes relating to the ease of doing business. And I will not say that this is the last change. The changes will keep coming. Make this in mind, unless and until we are smooth from all the way. Why these changes are required? Because why these changes were not there so much in the 1956, 2013 is bringing too many changes. So I will say changes are good for life. Not only this, I just want to say the reason being for bringing so many changes in the Companies Act 2013, the primary reason is that this act is to be read with the rules, is to be read with the regulation, is to be read with the mini circular and notification. And that is why whenever there is a difficulty, we are bringing out with the more changes. So this is the primary reason of ease of doing business. If you look at the screen, it doesn't stop ever. Once 2013 has come in, gradually there was a Companies Amendment Act 2015. There were around 22 sections amended, proposals were there. Then there was a Companies Act Amendment Act 2017, where there were almost 92 proposed changes were there. Then finally, recently we got the Companies Amendment Act 2019, where there are almost more than 60 changes were proposed. Now,
whenever we are going through reading this, that what is happening, what is going to happen, then one thing we should keep in mind, all the changes are just a replacement or a substitution. So nothing major introduced. Sir, how does the journey of this act started? The journey of this act started in its own way. Like it got placed at the Lok Sabha in the month of September this year, 2020. Now this journey is not starting from here only. For your information, it all started a long time back. The Companies Amendment Act has got its picture from the very beginning. It was rather in the year 2019, only September 2019, that there was a formation of a committee. That report was submitted by that committee, and the committee was CLC, the Company Law Committee, where there were not only the ministry representative were there, but also the corporate representative, like Siddharth Birla, Mr. Uday Kotak, they all were there to give their inputs to the committee to place it to the ministry. Later on, in the September 2019, finally they submitted, post their constitution, a report in the month of November 2019, giving the detailed reason for the changes. Now, post 2000 November 19, before the ministry could have taken it ahead, we all know the worldwide COVID pandemic has made us to come at a stage which is completely a. So there was a reason that was required a delay by the ministry in putting up before the parliament. So this delayed the process of putting it before the both the houses and getting it approved. Finally, it was placed in the Lok Sabha on 19th of September. Thereafter, subsequently, within a couple of days, it was moved to the upper house, that is called Rajya Sabha. Once the Rajya Sabha cleared it, on the 28th of September, finally it got the assent from the Honorable President of India and was gazetted as well. Now with this notification, the question comes in mind, does it become applicable with effect from 28th September 2020? Answer to this will be no. Why no? Because in the Gazette itself is mentioned that the sections will be notified in a phase-wise manner. The dates will be announced later on. But yes, these are the changes which have already become effective, will be given a complete effective by way of another notifications. So Abhi, whatever we'll discuss the key highlights. Okay, now we got it, that these are the key highlights and the dates will be announced. And it is in all the Amendment Act, it's nothing new. In all the basically Amendment Act, you will find the ministry do write that the notification date will be announced in the due course of time, because the reason being also here that it is not easy कि act को अभी के अभी implement कर दें, इसके साथ साथ इनके rules को भी amend करना है. तो उनके rules को amend करने के साथ once the entire draft will be ready, then there will be a date of notification for each and every sections. So this is what the journey. Now I will go ahead with the key changes. What are the key changes? See, the first and primemost change in this act is decriminalization of offences. That means a complete reduction of penalty. Means there were a lot of penalties, under the act. Rather, from my point of view, when we read Companies Act 2013, more than section, we find the penalty. So looking at the section, everywhere penalty, we get a panic attack. कि बॉस कितना पेनल्टी लगाएंगे ये लोग. So that was the reason कि more so to decriminalize it. Rather not limiting it to the decriminalize, the ministry has gone to the extent कि they have made certain offences which were non-compoundable, which were punishable to the matter of adjudication. वो adjudication में shift हो गया, जहाँ पर ROC and equivalent officers will be entitled to adjudicate those offences. ये अगर आपको याद हो, similar decriminalization step has been taken by the ministry by way of Amendment Act 2017 also. So that is the first step that they have taken to decriminalize the offences. The next step
is relating to the CSR. In CSR, they have brought in some changes which are welcome changes. We'll discuss it when we'll go into one by one. The next changes which come into the Companies Amendment Act 2020 is relating to directors, a much relief for the non-executive and independent directors. Then certain changes are operationally related, and then finally this act has got a chapter on the producer company. Because so far we were going by the Companies Act 1956 for the purpose of producer company only, but now this act has its own chapter which is producer company. So that's a welcome move, and I will not say this producer company is something very like UK, I can say that worth of discussion, but a welcome move that finally we will refer only one act even if we are reading the producer company also. So coming to the single window, and that is a welcome move. So these are the major changes, you can say, segregated based on the heads for understanding the basic parameters of the Companies Amendment Act 2020. Now I will take you to the one by one that how these changes are going to affect. Changes for CSR. We all know, if you recollect the recent ordinance 2019, which was given by the Honorable President of India, and later on is again continued to be effective in the month of February 2020 as an ordinance, which discuss about that the CSR, if you have not spent, then the CSR will be required to be carried forward, and the next 3 years you have to spend it if it is belonging to the long-term project. And if you do not spend it into 3 years, then it will be transferred ultimately to the government's account. So finally the CSR has also become like a IPF, either spend it or give it to the ministry. Means in any case you cannot say that I will not spend, because हम लोग पढ़ते हैं बार बार the company shall spend 2% of the average net profit of the last 3 financial year. ये बार बार पढ़ते पढ़ते हम लोग थक गए, क्योंकि उसी के बाद रीजन लिखा होता है, if the company has not been able to spend, then the company should give the reason of not spending such amount towards the CSR, और वो हम लोग बहुत बढ़िया से explain कर देते हैं उस reason को. So now the ministry said कि no more this kind of explanation, you have to spend it. If you are saying that I am not able to identify project, आप एक अकाउंट में ट्रांसफर करो, 3 साल में उसको स्पेंड कर दो, तब भी नहीं कर पाओ तो हमारा गवर्नमेंट का एक बैंक अकाउंट है, उसमें चुपचाप ट्रांसफर कर दो, वी विल डू द नीडफुल. अब ये प्रोविजन आने के बाद लोगों को लगा जब यू आर ब्रिंगिंग इन दिस प्रोविजन, देन यू शुड ब्रिंग वन मोर प्रोविजन कि हमने ज्यादा कर दिया हो तो सब्सिक्वेंट ईयर में कम करना भी अलाउ करो. बिकॉज हो सकता है सपोज करो एक प्रोजेक्ट लेके आए अपने बहुत बड़ा, and this year CSR में बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ गया. Like say for example, I am just saying this COVID time, you all know COVID fund is allowed under the CSR. So many company has continued to expend in lot of money towards the CSR. हो सकता है अपने जितने CSR का बफर था उससे ज्यादा भी कर दे. तो जब मैंने ज्यादा कर दिया तो you should allow me the next year to compensate also. So this is the welcome move. The ministry has taken a cognizance of this and said yes, this is a valid request. If it is the amount means you have spent higher, then you will get the compensation of this amount in the next year, right? This is the one. Second, they are saying अभी हम लोग CSR प्रोविजन में पढ़ते हैं कि वो जब रिक्वायरमेंट 3 साल तक खत्म हो जाए तो you are not required to have a CSR committee. Now this is that forget about the threshold which is applicable for CSR. If say for example this is a new insertion, they are saying अगर आपका जो CSR अमाउंट जो आपको स्पेंड करना है और वो 50 लाख को एक्सीड नहीं करे, से मेरा प्रॉफिट था बहुत ही छोटा सा, on a roughly basis I will say my profit is 1 crore, average net profit of 3 years 1 crore, उसका कितना करना है मेरे को 2%, means 2 lakh, right? 1 crore था, उसका 2% is 2 lakh, तो मेरे को 2 लाख अमाउंट एक्सपेंड करना है टुवर्ड्स CSR. अब इस 2 लाख के लिए मैं कमेटी बनाऊं, CSR कमेटी की मीटिंग करूं, सिटिंग फीस के चेक दूं, आइडेंटिफाई करूं,
CSR की एक एनुअल रिपोर्ट बनेगी, वो भी कमेटी से होके आएगी, तो उसके लिए भी एक कमेटी की मीटिंग हो जाएगी। तो मैं 2-3 तो मीटिंग कर लूं, सिटिंग फीस दे दूं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इसकी सिटिंग फीस वगैरह दे के ही दैट अमाउंट विल कम नियरली अराउंड से फॉर एग्जांपल 50, 60 etc. So if 50-60,000 I will incur from this, then why there is a reason of having the committee and then making it more burdensome? So the ministry said if the amount is lesser than 50 for spending towards CSR, then there is no need for CSR committee. Sir, there is no need at all. No need at all. There is nothing, there is no requirement of this CSR committee. Just give me a minute. Let me open the updated slide so that I can show you that what exactly. Just a sec. I'm opening this updated slide for you people. See how this higher expenditure will help me in carry forward. I have given the hypothetical example. It's again hypothetical because I do not know when the notification will come effective and from which year it will start. So let's say 2022, I have given example of 3 years. मैंने प्रॉफिट किया 100, 200, 300 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। अब उस प्रॉफिट में मैंने अपना टोटल अगर मिलाओ तो 3 साल का प्रॉफिट हुआ मेरा 600 करोड़, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 600 करोड़ का प्रॉफिट है इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अब मेरे को कितना करना है एक्सपेंड? 2%, 2% 600 करोड़ का होता है 12 करोड़। So I need to spend towards CSR 12 करोड़। बट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैंने स्पेंड कितना कर दिया है? 15 करोड़। See, mind it, I have to spend 12 crore, but I have spent it 15 crore for this. So ये जो 15 करोड़ में मैंने कितना ज्यादा कर दिया? It's a very easy and mathematical. 3 crore I have incurred in excess. So these 3 crore I will get as a set off in the next year. अगर नेक्स्ट ईयर भी सपोज करिए मेरा 12 करोड़ का ही रिक्वायरमेंट है, तो नेक्स्ट ईयर मेरा कितना अमाउंट हो जाएगा? इट विल बिकम 12 minus 3 because 3 I have already incurred. So that means the next year it will become 9. Dear, it's a set off. Merely in short term, I will say it's a set off. So this is related to the CSR. Now coming to the directors related. How come directors are going to be benefited? Directors are going to be benefited in a many way. First, as we are discussing, relief from penal measures, relief from penalty, relief from fine. Because जब एक्ट में सब जगह रिड्यूस हो रही पेनल्टी, तो डायरेक्टर लोग के लिए रिड्यूस हो गई। Then second, they have got a relaxation in 165 डायरेक्टरशिप। मतलब सर डायरेक्टरशिप बढ़ गई? नहीं, डायरेक्टरशिप अभी भी 20 है, बट उसमें एक पेनल्टी क्लॉज था कि इफ द डायरेक्टर contravene this section, that means he becomes director in more than 20 company, then he shall be punishable with an amount not exceeding the threshold plus a amount per day. अब पर डे वाले में चक्कर क्या था ना कि वो डर लगता था कि पर डे सुन के कि पर डे अगर ये डायरेक्टर बेचारा दिया तो फिर तो इसके पास बचेगा ही क्या। Say for example, a penalty has come to a notice of mine after a period of 2 years कि मैंने 2 years ध्यान नहीं दिया, मैं कंटिन्यू कर गया, तो 2 years 365 730 730 पे आप पर डे की पेनल्टी लगाओ तो it will turns into many thousand. So the government has restricted it, put a upper cap that in some cases में yes there will be a per day penalty, but even if there is a per day penalty it should not exceed a threshold. So that means bringing in a cap here. This is called a cap to the penalty, which is new under the Companies Amendment Act 2020. The next change relating to the director is, this is the third one, which is a relevant one. अभी तक हम लोग एक्ट में क्या पढ़ते हैं? If there is a loss or if there is an inadequate profit under 196, 197, then what is the provision? आप सीधा बोलोगे सर वो शेड्यूल 5 का इफेक्टिव कैपिटल पढ़ लो। इफेक्टिव कैपिटल तो आज भी अलाउड है,
मैं बोलूंगा यस यू आर राइट, इफेक्टिव कैपिटल कर लो, इफेक्टिव कैपिटल आज भी अलाउड है, बट वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। से फॉर एग्जांपल मेरा तो ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर को छोड़िए, एनईडी भी है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और मेरा तो लॉस हो गया, अब मैं उनको कैसे दूं? हाउ कम आई विल गिव देम? दैट you can say a gap was there. There was nowhere it was mentioned in case of inadequate profit you can give by schedule 5. तो सर एक बात बताओ, क्या उन लोग को अभी नहीं पेमेंट होता था? अभी पेमेंट होता है। तो अभी कैसे होता है? अभी पेमेंट होता है by way of NDs और ID को they are paid by way of central government, the shareholders approval. Earlier central government approval was there. Once the 197(12) come into the picture, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर हट गया, शेयर के पास पावर आ गया। तो अब क्या है ना, जब जब देना हो तो शेयर के पास जाओ, अप्रूवल लो, फिर दो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये तो डिस्पैरिटी हो गया है, मतलब आप होल टाइम डायरेक्टर को तो दे दे रहे हो शेड्यूल 5 के हिसाब से, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिनका लॉस में दूर दूर तक हाथ नहीं है इतना बड़ा, उन लोग को आप नहीं दे रहे हो। तो they are recommended, the committee recommended it should be at par, and accordingly the ministry has decided that even the non-executive directors and ID will be paid in case of inadequate profit or the loss by way of a schedule 5, and accordingly schedule 5 will also be amended for this. तो अब से NED और ID को भी schedule 5 के हिसाब से आप पेमेंट कर पाओगे। Then, as I told you, there are some operational related. The operational related changes are all welcome changes. उनमें क्या क्या है, एक random list देखें अपने, जैसे name change, right issue time period, SBO relief मत पढ़िएगा, इसको पढ़िए beneficial ownership relief. And then under 117 में जो filings होती हैं वो, उनको कुछ कंपनियों को periodic results देने पड़ जाएंगे वो. Then NCLT के कुछ higher benches बनेंगे वो, means NCLT will be allowed, NCLT to allow to have some benches more, and then कुछ कंपनियों की listed कंपनी के ब्रैकेट में नहीं रखना, और लिस्टिंग रेगुलेशन जो अब्रॉड में हम लोग करते हैं फॉरेन कंपनीज के लिए, उनको मच स्मूथ बनाना. These are the operational changes, means from the concerning the viewpoint of the company. So these are the operational changes, are welcome changes. I will take one by one कि सर ये क्या changes है. Name change is not a change. Name change, I am saying कि what is exactly happened is that this section 16 is there. जो मैं पेनल्टी आपको बता रहा था ना, गवर्नमेंट ने, इस कमेटी ने पेनल क्लॉजेस को रिड्यूस करने का सोचा, तो आपको हंसी आएगी, इन कमेटी ने, इस द कमेटी व्हिच वाज फॉर्म, दे हैव आइडेंटिफाइड A, B, C, D, E, F, G, H टाइप ऑफ ऑफेंसेस. सर ये क्या होता है? A to H टाइप ऑफ ऑफेंसेस के कैटेगराइज किए. ये होते नहीं है, पढ़ मत लीजिएगा, कई लोग बोलेंगे A टाइप ऑफ ऑफेंसेस, B टाइप ऑफ ऑफेंसेस, होता नहीं ऐसा. कैटेगराइज किया इन्होंने A to H. A में क्या हुआ? A बोला उस टाइप के ऑफेंसेस जब आप किसी ऑर्डर का पालन नहीं करो. B हुआ उस टाइप के ऑफेंसेस जब किसी रिकॉर्ड को आप मेंटेन नहीं करो. C हुआ उस टाइप का ऑफेंसेस जो आपने कोई डिस्क्लोजर वगैरह नहीं दिया हो. D हुआ रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस. E हुआ जब आपको कुछ इंटीमेशन स्टेक होल्डर लोग को देनी थी वाइडर इंटरेस्ट में, ट्रांसपेरेंसी में, और आपने नहीं दी. F हुआ जब आपने कुछ ऐसा सब्सटेंशियल वायलेशन किया हो जिसका इफेक्ट पब्लिक शेयर होल्डर पे लार्ज पड़े. और G हुआ लिक्विडेशन से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स वगैरह से. और H हुआ जहां पर कहीं पेनल्टी नहीं हो वो. तो ये सारे उन्होंने कैटेगराइज किए A to H. इसी में उन्होंने कैटेगराइज करते हुए देखा कि लॉ में कहीं कहीं जबरदस्ती पेनल्टी लगा हुआ है, एंड दे कुड फाइंड द सम अल्टरनेटिव मैकेनिज्म. आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड अल्टरनेटिव मैकेनिज्म. The law said you have a way to find out the alternative mechanism. Why not do this? जैसे नेम चेंज में क्या है ना, अभी भी आप पढ़ोगे 16 में लिखा है, आपको गवर्नमेंट बोलेगा विद इन 6 मंथ नेम चेंज करो, नहीं चेंज करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक सो एंड सो एक्शन. उन्होंने बोला भूल जाओ. बोला आप ये सब मत रखो, आपने क्या करो, सीधा रखो कि द कंपनी शैल चेंज अ पीरियड विद इन 3 months, और अगर 3 months में नहीं करे तो इशू अ नेम, ऑटोमेटिकली अलॉट द नेम.
जब किसी का नाम हम लोग पढ़े थे ना एक्ट में, जब बहुत आइडेंटिकल होता है या फिर रिसेंबल करता है किसी ट्रेडमार्क को, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्ट टू चेंज द नेम, कंपनी विल चेंज द नेम विद इन 6 मंथ। अगर कंपनी नहीं करता है तो कंपनी को ये करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोला ये सब मत करो, आप उनको सीधा एक टाइम पीरियड दो, इसमें क्यों पेनल्टी लगाना है, अगले को नाम तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो आप टाइम पीरियड को थोड़ा रिड्यूस करो कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर करो। नहीं करते हो तो इंस्टीड ऑफ पेनल्टी, कभी कभी स्वीट पेनल्टी होती है ना, बोले इंस्टीड ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी मत लगाओ, बोला उसको सीधा एक नया नाम अलॉट कर दो, बोलो ये तुम्हारा नाम रहेगा आज से, बस बात खत्म। क्लियर? सो उन्होंने ये प्रोविजन इसमें इंसर्ट कर दिया, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट कि वी विल पनिश यू। समटाइम्स यू ऑल नो कि पनिशमेंट इज गिवन इन मेनी वे, इट्स नॉट दैट नेसेसरी कि पनिशमेंट शुड बी बाय वे ऑफ पेनल्टी। आप कुछ अच्छा भी किसी के लिए कुछ ज्यादा अच्छा भी कर दो तो वो भी उसको गिल्टी फील करता है। कई लोग बोलते हैं ना इतना एहसान करना कि कभी एहसान मत करना, तो when we are doing something more extraordinary then you feel guilty of the same. So the central government decided 3 months में नाम चेंज करिए, otherwise we will allot you the name automatically and that will be your name from the next day. So that is the first relating to the name change incorporation. Right issue, we all know right issue is open for a period of 15 to 30 days under the act section 62, but most of you may or may not be aware that SEBI has come out with a paper, discussion paper on this. SEBI want कि this entire process of right issue should be truncated. Truncated means trimmed, and it should be completed within a period of 50 days, 50. तो सर 50 तो आप ज्यादा बोल रहे हैं, नहीं 50 they are saying everything, बोर्ड मीटिंग भी कॉल किया, प्रोसेस भी हुआ, अलॉट भी हो गया, सब कुछ। They are saying you shouldn't take more than 50 days for the entire process, and that is what the SEBI has decided. So based on the scene and then considering the going forward scenario, it is decided that even in some cases the right issue should be lesser than, and it should be allowed by the central government for a class of companies as may be decided. So that's why this provision has been inserted for the purpose of right issue. Next is, as I told you, the beneficial ownership relief. Why this beneficial ownership relief I am mentioning? I'm not mentioning it, the SBO, significant beneficial ownership relief. The beneficial ownership relief is for the one reason that the central government has decided, if you remember section 90, no one will forget 90. 90 is section where we decided that every significant beneficial owner SBO जो हम लोग को डरा के रख दिया था, they will give a disclosure, and once they give a disclosure, then what the company has to do, the company has to disseminate or file such disclosure with the ROC as well. That is called SBO declaration. So उस section 90 ने already दहशत मचा रखा है, और 91 में subsection 1 में there is exemption provision. The central government may exempt certain class of company. तो वो 90 में तो है। 89 क्या है? 89 is altogether is about a normal beneficiary. क्या है? 89 is all about, 89 talks about normal beneficial ownership declaration. Normal beneficial ownership declaration. Normal beneficial ownership declaration means जैसे हम लोग एक दूसरे के शेयर्स के बदले लेते हैं ना, से फॉर एग्जांपल होल्डिंग कंपनी है और उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो सब्सिडरी कंपनी का 100% शेयर ओन करती है, तो एक शेयर होल्डर तो हो नहीं सकता, और वो WOS कैसे होती है, तो वो क्या करती है, 2-3 अपने ही लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव लोगों को उसमें शेयर्स दे देती है, बेनिफिशियल ओनर बना देती है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल बेनिफिशियल ओनर, नॉट SBO. 89, section 89 I am talking about. So government felt it should not be mandatory for every cases, because now you all know the government is focusing in development of IFSC, International Financial Service Center. Gujarat is one of the case जहां हाईटेक सिटी होगी, GDR इश्यू किए जाएंगे, IDR, तो वहां पर गवर्नमेंट saying why not in those cases
where they will be not actually beneficial owner, someone else will be, they will be the registered owner. In those cases this compliance should not be applicable, and accordingly in a wider interest it has been chosen कि अभी कंपनी क्लासिफाई नहीं करते हैं, एक 89 सेक्शन में ही पावर दे देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट may by way of notification exempt class of companies from complying with this requirement if it is necessary in the public interest. So means government के पास एक inbuilt power चला गया, omnibus power आ गया कि you can exempt certain class of companies as well. So that is a relief from the beneficial ownership, not from SPO. Next, filing under section 117. मैं इतना ज्यादा दिखा दिया डराने के लिए आपको, बस इतने चेंजेस है नहीं. अगर 117 याद हो तो ये खतरे वाला नंबर है. इसके अंडर में आपको MGT 14 बोल के एक फॉर्म होता है. अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हो तो आपको उस फॉर्म की वैल्यू पता होगी कि हर छोटी छोटी बात के लिए MGT 14 फाइल कर दो. कुछ भी हुआ MGT 14 फाइल. तो वो सारे मैटर कहाँ लिखे हैं? 117 में. और ये लिस्ट लंबी चलती जाएगी, कहीं खत्म नहीं होती. लास्ट में भी जाके वो बोल देता है कि जो पावर 117(3) में है वो भी इसमें कवर्ड होंगे. मतलब जो बोर्ड को पावर है टू इशू सिक्योरिटीज, टू बोरो सिक्योरिटीज, टू अपॉइंट सेक्रेटरी ऑडिटर, ये सब भी पावर इसमें कवर्ड हो जाएंगे. तो इतने पावर कवर्ड हो गए कि आपको सब कुछ लॉ के अंडर में यहाँ पर फाइलिंग करने पड़ेंगे फॉर्म 117 में. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बोले फाइलिंग बहुत बर्डनसम हो रहा है. तो पहले उन्होंने क्या किया था, जब इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन गारंटी और सिक्योरिटी देते हो तो उन्होंने बैंक कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया था, बैंक्स को. क्योंकि बोला बैंक तो डे टू डे डेली में एक दिन में कितने देती होगी आपको नहीं पता, कितने लोन, कितने गारंटी और कितने सिक्योरिटी. तो बोलिए अगर MGT 14 ही फाइल करती रही तो फिर लगेगा पूरे दिन में 365 दिन में मिनिस्ट्री के पास वो उससे ज्यादा तो फॉर्म फाइल कर दी. तो बोले बात तो सही है, तो बोले फिर बैंक कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दो. तो उन्होंने बैंकिंग को एग्जेम्प्ट कर दिया था अर्लियर. बाद में इस कमेटी ने रिव्यू किया, बोला ये तो सिर्फ बैंकिंग बिजनेस नहीं है, इवन NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो भी इस टाइप के बिजनेस करती है, लेंडिंग वगैरह. और इवन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी इस टाइप के लेंडिंग बिजनेस करती है. तो इन दोनों को भी एग्जेम्प्ट किया जाए, NBFC भी और हाउसिंग फाइनेंस भी. तो फाइनली दे बोथ वेर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ 117. सो 117 में ये सब कंपनियां अगर अपने नॉर्मल डे टू डे मैटर के लिए अगर लोन्स गारंटी एक्सटेंड कर रही है 179(3), तो वो इन कंपनियों के लिए सिर्फ एग्जेम्प्टेड है. बाकी कंपनियों के लिए एज इट इज 179(3) का वो पूरा प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा. आई थिंक किसी ने चैट में भी क्वेरी किया तो उनको भी आंसर मिल गया कि इट इज ओनली फॉर दीज कंपनी दैट दिस रिक्वायरमेंट इज रिलैक्स्ड, not for every company. So this is a relaxation that have been provided under section 117. Next comes जो मैंने बताया definition and listing. ये एक changes है. इसमें क्या हो रहा है ना, बेसिकली अगर आपको अभी की लिस्टिंग स्ट्रक्चर कितनी पता है, मैं शॉर्ट में बता दूं कि there are listed company जिनकी specified securities listed होती है, plus SEBI has a different altogether norms on the listing already. Like एक उनका ILDS है, इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज. एक उनका ऑलरेडी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोल के रेगुलेशंस है 2013. सो NCRPS और ILDS रेगुलेशन ऑलरेडी इन प्लेस है सेबी के, और इनके अकॉर्डेंस में ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स. और NCRPS में तो फिर भी लोग पब्लिक कंपनी एप्लीकेबल होती है, सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए. बट जो सीबी का इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज है उसके अंडर में इवन द प्राइवेट कंपनी कैन इशू, दे आर अलाउड टू इशू बॉन्ड्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एटसेट्रा व्हिच कैन बी लिस्टेड. एंड उसलिए बिकॉज सिंस प्राइवेट कंपनी विल बी अलाउड टू गेट दीज सिक्योरिटीज लिस्टेड, दे विल अज्यूम द नेचर ऑफ लिस्टेड. वंस दे अज्यूम द नेचर ऑफ लिस्टेड, तो जब आप कंपनीज एक्ट में आप उनकी डेफिनेशन पढ़ोगे सेक्शन 2 में आके लिस्टेड कंपनी की, तो यू विल डेवलप अ माइंडसेट 52 पढ़ते कि भाई ये तो लिस्टेड कंपनी हो गई. तो लिस्टेड कंपनी हो गई तो आप उसके सारे के सारी कंप्लायंस करो लिस्टेड कंपनी के हिसाब से. जहां जहां लिखा है ना कंपनीज एक्ट में, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव दिस, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव दिस, NRC, CRC, SRC सब एप्लीकेबल हो गई.
तो वो एक प्राइवेट कंपनी पे भी कहीं एप्लीकेबल नहीं हो जाए, इसीलिए द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड that this power should be there in the definition clause, that the central government may exempt such class of companies from the listed company definition under the act. Means basically those private entities which will get its debt securities listed, etc. Similarly, it comes now there is a new insertion. They are saying that there will be a relaxation provided under the act from certain compliances when they will be seeking listed abroad. Why? To facilitate more and more corporatization and more of our presence outside India. जब आप अभी इशू अगर शेयर्स करते हो फॉरेन जुरिडिक्शन में, तो कंपनीज एक्ट के एंगल से आपको बहुत कुछ बिसाइड द नॉर्मल रेगुलेशंस एप्लीकेबल देयर यहाँ के भी फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे आपको यहाँ के हिसाब से लेटर ऑफ ऑफर निकला, आपको यहाँ के हिसाब से उनको पोस्ट करना पड़ा, आपको यहाँ के हिसाब से एडवर्टीजमेंट देना पड़ा. तो ये सारी जो प्रोसेस है, these process will become in line with those requirement, or this process will stand exempted for those company which are getting its securities listed outside. So this is in respect of the listing. Now another thing which is new, totally new, is that 129A, it's altogether a new section which has been introduced by the ministry under the act. ये क्या है सर? ये बोलता है, अभी तक अगर आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग रिजल्ट फाइल करते हैं. इफ यू आर फ्रॉम लिस्टेड एंटिटी और एवर गॉन थ्रू दी सेबी ओडीआर, यू विल फाइंड वी ऑलवेज मेंशन दैट द लिस्टेड कंपनी shall submit the quarterly results within a period of 45 days, और फॉर द मार्च एंडिंग के लिए within a period of 60 days. और जब मार्च एंडिंग होता है तो ऑडिटर रिपोर्ट के साथ जाता है, और जब क्वार्टर का होता है तो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट के साथ जाता है ऑडिटर की. तो ये था अभी तक लिस्टेड के लिए. बट एक नया चेंज आ गया 129A, जो बोलता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मे रिक्वायर सच क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी. सच क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी मीन्स इवन इट विल बी गोइंग बियॉन्ड द लिस्टेड एंटिटी. हो सकता है वो कुछ पब्लिक कंपनीज हो सकता है वो कोई अनलिस्टेड कंपनीज की सब्सिडरी वगैरह हो सकता है वो लिस्टेड कंपनी की एसोसिएट कंपनीज हो. इस ढंग से भी रूल फ्रेम होना बाकी है और फर्दर लॉ में क्लैरिफिकेशन आना बाकी है. बट देन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू प्रिस्क्राइब सच क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, जिन लोगों को दे विल बी रिक्वायर्ड, फर्स्ट आप स्लाइड पे देखो, दे विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन पीरियोडिकल बेसिस. अब अभी ये मत लगा लीजिए कि क्वार्टरली है, हो सकता है ये हाफ ईयरली हो जाए. पीरियोडिक है. गवर्नमेंट रिजर्व्स द पावर कि उनको एक बार हाफ ईयरली स्टार्ट कराए कि क्वार्टरली स्टार्ट करा ले. सेकंड, दे विल बी रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड एंड कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू, दोनों रखा है, ताकि ऑडिट हो दैट मींस ईयर एंड, और लिमिटेड रिव्यू हो दैट मींस क्वार्टर या 6 month एंड. एंड देन दे विल फाइल विद द रजिस्ट्रार कॉपी ऑफ सच रिजल्ट विद इन 30 days. मंस आप ये तो करोगे और 30 days में रजिस्ट्रार के पास फाइल करोगे. तो अब अगर आप देखोगे तो थोड़े दिन में वो जो अनलिस्टेड कंपनियां खुश होती थी कि भैया अनलिस्टेड कंपनी, उसमें तो कुछ नहीं होना है, अकाउंट्स वगैरह नहीं बनना है, चाहे वो क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, even those entities will be required to prepare those periodic results. It's a new section 129A. Next, प्रोड्यूसर कंपनी में मैं बहुत बोल लिया. प्रोड्यूसर कंपनी ऑलरेडी अ वेलकम मूव, बिकॉज अभी तक हमारा ये बाहर छूटा हुआ था, हम जिसको छोड़े हुए थे. आप लोगों को पता होगा इन द ईयर 2002 दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑफ अमेंडमेंट पुराने एक्ट में, और फिर पुराने एक्ट में चलता ही आया. जब बोलते हैं एनी 10 or more इंडिविजुअल्स या फिर 2 or more इंस्टीट्यूशंस या फिर कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, जब ऐसी एक्टिविटीज के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड लॉ में प्राइमरी प्रोड्यूस करता हो या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह हो, तो ये सारे एक्टिविटी के लिए अलाउड हुई. तो 2013 एक्ट आने के बाद भी उन्होंने एक बार बोला कि एक बार इसी को चलने दो, मतलब पुराने वाले प्रोड्यूसर कंपनी को ही. बाद में जब अभी लेटर ऑन द मिनिस्ट्री रियलाइज कि नाउ देयर इज अ नीड to get it into the act itself so that we will say complete bye to 1956, and accordingly this 21A chapter has been introduced
a complete new chapter on the producer company under the Companies Act 2013. सर हम लोग तो और भी चेंजेस सुने थे. हाँ जी, और चेंजेस जो है वो पेनल्टी के ऊपर बताता हूँ. पेनल्टी के ऊपर मजेदार चेंजेस है, बिकॉज पेनल्टी वाले जो चेंजेस हैं लोग खुश हो रहे हैं कि यस पेनल्टी रिडक्शन हो गया, ये हो गया. मेनली जो मैंने बताया आपको याद रखिए, कुछ रिडक्शंस वगैरह नहीं है. फर्स्ट, दे हैव मेड अ कैप. कुछ सेक्शंस में ब्लैंकेट कैप नहीं थे, उन्होंने कैप डाल दिए कि पेनल्टी इन एनी केस शुडंट एक्सीड मोर देन दिस. दैट इज कॉल्ड अ कैप ऑन द पेनल्टी एंड नथिंग बियॉन्ड दैट. क्योंकि आप ये सोच रहे हो रिड्यूस कर दिया, तो मैं बोलूंगा कि रिड्यूस भी किया है, प्लस अ कैप इज देयर ऑन द पेनल्टी वेयर देयर वर लेफ्ट ओपन एंडेड पेनल्टी. से फॉर एग्जांपल 450, अगर आप सेक्शन 450 पढ़ो तो आई एम जस्ट रीडिंग आउट फॉर योर confirmation that it says a penalty which may extend to 1000 rupees for every day after the first during which the contravention continues. Means 1000 per day. अब आप समझ लीजिए 1000 पर डे के हिसाब से मैं आपको बताया ना, मैं 2 साल 3 साल ध्यान नहीं दिया या 2 साल ही नहीं दिया, तो 2 साल में कितने दिन हुए? 730. 730 को 1000 से इंटू करिए, मैथ्स है 7,30,000 पेनल्टी. हाँ 7,30,000. तो गवर्नमेंट बोला ऐसे डराओ मत, इतना डराओगे तो फिर काम नहीं होगा. इट इज ऑलवेज से ना दैट दहशत के माहौल में आप काम नहीं करा सकते. तो देन द पेनल्टी दे हैव मेड इट इम्पोज अ कैप कि 450 में आप कैप डाल दो 2 लाख का. मींस इट विल बी 2 लाख, अ कैप व्हिच शैल नॉट बी एक्सीडेड इन एनी केस. तो वो पेनल्टी से ज्यादा भी हो तो मैक्सिमम हो गया 2 लाख का, राइट, कंपनी के ऊपर. तो ये हो गया 450 में कैप. और 450 वो है जहां पर कहीं भी पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं है. 441 जैसे 441 में क्या है? 441 इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग. वहां पर एक गलती क्या था, छोटा सुधार ही है, उसके एक सब प्रोवाइजो में लिखा हुआ है 441 में कि देन दैट से फॉर एग्जांपल इफ द ऑफिसर डज नॉट कंप्लाई विद दिस और डू नॉट और contravene the order of the NCLT or the registrar, then the offense shall be punishable. अब उसमें भी वो लोग पनिश डाल दिए हैं. तो लोग हंसे कि एक तो आप कंपाउंडिंग कराने गए और अगर बाय द वे कंपाउंडिंग ऑर्डर को नहीं माने तो फिर पनिशेबल हो गए. तो लॉ ने उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया. उसमें अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं माना है तो वो अगर वो कंपाउंडिंग होगा तो फिर अब डबल से अमाउंट होगा. मतलब से फॉर एग्जांपल आपका मैटर सेटल हुआ, आपको बोला 50,000 जमा कर दो, बात खत्म करो, आप करना भूल गए. अब आप जब बोलोगे ना कि सर हम तो भूल गए आज कर दे रहे हैं, तो वो बोलेगा कि अब 50,000 की जगह 1 लाख जमा करो. मतलब डबल अमाउंट लेके कंपाउंडिंग ही करो. अब हम कुछ पनिशेबल फिर नहीं लगाएंगे, राइट. सो दैट मींस मेकिंग इट फ्लेक्सिबल. 441, 450 I told you. 446B, why I highlighted those 3 cases? Because these needs discussion. That's the reason. 446B क्यों? 446B if you remember, इसमें सेक्शंस आ गए थे जिसमें स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी को उन्होंने द लॉ हैज रिकॉग्नाइज्ड कि उन लोगों को देयर इज अ नीड to give them a 1% company, a small company, I correct myself, in needed they are required to be given some relief. They should not be imposed with a penal provision. तो उनकी पेनल्टी को रिड्यूस किया गया था to the half of the extent. Now the ministry has decided to reduce it further by extending the zone to the even other companies. What are the other companies? Other companies are the startup company और द प्रोड्यूसर कंपनी. इन दोनों कंपनी को भी इस ब्रैकेट में ला दिया कि भैया आप लोग भी इनके साथ ब्रैकेट में आ जाओ एंड यू आल्सो एंजॉय द सेम प्रिविलेज व्हाट द अदर्स आर एंजॉयिंग. मींस द पेनल्टी शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द हाफ ऑफ द अमाउंट. व्हाट आर द सेक्शंस अबाउट? 446B. अब मैंने बोला कि ये तो एक हुआ एक्सटेंडिंग. 446B का 2 है. एक हुआ एक्सटेंशन टू द प्रोड्यूसर कंपनी एंड स्टार्टअप कंपनी. मतलब वो लोग भी इसमें इंक्लूड हो गए जिनकी पेनल्टी उनके बराबर हो गई, हाफ ऑफ दी जो भी प्रिस्क्राइब है कहीं. प्लस इनमें भी एक कैप लगा दिया कि वो हाफ भी होकर अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा तो 2 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा. समझ गए? तो कैप ऑन दी पेनल्टी. 446B, 441 I told you, 450 I discussed with you. Then there are certain interesting, अगर आपको याद होगा लॉ में भी कहीं पर बोला था जब हम लोग को
फाइलिंग के समय जब हम लोग डर गए थे, जब अभी फाइलिंग वगैरह करते हो आप डे टू डे लाइफ में, तो यू ऑलवेज डिस्कस अबाउट कि सर वो 403 में एक सेक्शन था, आई एम डिस्कसिंग दिस सेक्शन आउट ऑफ माय, मतलब लाइक जस्ट अ नॉर्मल सेक्शन बिकॉज इट इज रेलेवेंट फॉर अस टू डिस्कस। जब कंपनी लॉ कमेटी 2016 में अपना रिपोर्ट दी थी, तो उन्होंने 403 में प्रपोज दिया था कि अगर कहीं पर फॉर्म, वहां पर 3 बातें थी। एक बोलता था एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न फाइलिंग के लिए बोलता था अगर यहाँ डिले हो तो इसके बाद पर डे ₹100 लगाओ, जो आज भी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल टाइमली नहीं होते हैं, तो इनके ऊपर बाद में जब फाइल हो तो इनके ऊपर डबल पेनल्टी लगा दो, मींस मोर देन डबल, सो दैट अगर ये लोग 2 या 2 से ज्यादा ओकेशन पे ऐसी गलती करें, नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं, सपोज करिए मैंने एमजीटी 14 फाइल नहीं किया एंड इट इज मोर देन ट्वाइस, मतलब इस बार भी डिले किया, नेक्स्ट क्वार्टर का भी डिले कर दिया, तो बोला जब 2 और मोर ओकेजन हो जाए तो उसकी पेनल्टी एटलीस्ट मोर देन ट्वाइस होनी चाहिए। हालांकि ये सेक्शंस फॉर योर इंफॉर्मेशन अभी इफेक्ट में नहीं आया, और इसके इफेक्ट में नहीं आने से पहले ही कमेटी ने सजेस्ट कर दिया कि ऐसे सेक्शन से डराओ मत। तो उन्होंने क्या किया, वो जो अमाउंट है ना कि जो लिखा था कि मोर देन ट्वाइस, उन्होंने वहां पर उस वर्ड को रिप्लेस करवाया और बोला द स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड शुड बी चेंज द अदर वे, दैट इट शुड नॉट बी मोर देन, जो वर्ड है ना मोर देन ट्वाइस, उस वर्ड को हटा दीजिए, बिकॉज दैट लुक्स लाइक कि आप पूरा दहशत में फॉर्म फाइल करवा रहे हो। So that twice the penalty जो amount था, that word is also removed. So beside this 3 or 4 major section of penalty which I discussed with you, 441, 450, 446B, 403, the other section reduction to the punishment is all about relating to the auditor's duty, section related by transactions में कुछ reduce कर दिए, incorporation में कुछ reduce कर दिए penalties को, कहीं cap लगा दिया. So these are all decriminalization of offenses, and that's why more than sections जितने हैं ना, ये अभी आप लोग जर्नी में अगर देखें आप, तो we have discussed only few key changes. क्या CSR में कैरी फॉरवर्ड वाला कंसेप्ट जो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे आज ज्यादा खर्चा कर दिया तो कल कम करेंगे, तो कैरी फॉरवर्ड CSR में, लिस्टिंग और अब्रॉड में अलाउ कर दिया, कुछ लिस्टेड कंपनी को एग्जेम्प्ट, राइट इश्यू का टाइम पीरियड थोड़ा रिड्यूस करने के लिए अलाउ कर दिया कि यस इट शुड बी। देन देयर इज ए NCLT के कई और बेंचेस स्टैब्लिश होंगे, बिकॉज NCLT में बहुत केसेस आते हैं। अभी तक NCLT एक ही बेंच, प्रिंसिपल बेंच दिल्ली से डील करता है, तो बोला जब केसेस इतने बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंसॉल्वेंसी कोड प्लस डेलीगेशन ऑफ पावर अंडर द एक्ट आल्सो फॉर अदर एक्टिविटीज, तो इतने मर्जर्स अमालगमेशन सब कुछ NCLT के आने के पास अब NCLT के बेंचेस भी चाहिए, तो वो पावर मिल गया। देन there is a power relating to the other activities, like say for example we have discussed in a small अगर आप देखें, so these operational power if you count on numbers they are almost like 7 or 8, अगर आप effectively count करो तो this operational changes will come 7 or 8, अगर आप एक मेजर को छोड़ दो जो है periodic result introduction, जो मैंने बताया ना कुछ अनलिस्टेड कंपनियों के लिए अब मिनिस्ट्री ले आएगा कि उनको या तो क्वार्टरली या हाफ ईयरली रिजल्ट्स अप्रूव करवाने पड़ेंगे, बट वो अभी नोटिफाई नहीं हुआ अभी कोई भी सेक्शंस, तो वी कैन नॉट से वेदर इट्स क्वार्टरली और वेदर इट्स हाफ ईयरली, बट ये सारे सेक्शंस अगर आप गिने तो मेजर चेंजेस जो है वो 6-7 है। द ऑल रेस्ट चेंजेस आर रिलेटिंग टू द पेनल मेजर्स। पेनल में भी वी हैव tried to discuss the major sections because these are the sections which can be asked in the which can be basically you will be relevant for our deliberation or for our exam purpose or for our further practical purpose, क्योंकि ये सारे sections कुछ ज्यादा यूज होते हैं। So these are the basic I wanted to cover in a nutshell. I will just before for the sake of overall knowledge, because we all people are there and today we are on a holiday mode. Before we jump into our holiday mode, I will just in nutshell will say that what we discussed are the key amendments of 2020. 2020 got presidential assent on 28th of September, but sections सारे एक कर date wise notifies होंगे sooner or later. So once they are notified, accordingly their applicability will start. So अभी तक applicability उस sense में start
नहीं हुआ। और हम लोगों ने चेष्टा की कि वी हैव कैटेगराइज द चेंजेस सो दैट वी विल अंडरस्टैंड मोर इन अ शॉर्ट वे। जैसे कैटेगराइज क्यों किया मैंने, कैटेगराइज किया भाई कि पहला अगर आप देखो तो नॉर्मल डायरेक्टर्स कुछ चेंजेस जो हैं वो बेसिकली आप देखो स्टार्टिंग में तो एक सीएसआर से रिलेटेड, पेनल्टी से रिलेटेड, डायरेक्टर से रिलेटेड, ऑपरेशनल रिलेटेड और एक प्रोड्यूसर कंपनी। सीएसआर में आपको बता ही दिया कि सीएसआर में व्हाट इज द रीजन। देन वी हैव डिस्कस्ड प्रोड्यूसर कंपनी का इंट्रोडक्शन छोटा सा। डायरेक्टर्स का मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टर्स में की चेंजेस इज दैट नाउ एनईडी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल आल्सो बी एंटाइटल्ड in case of inadequate profit for their commission and seating fees. Lastly, operational related changes में हमने कंपनी के एंगल से कुछ 6-7 बातें की। वो क्या थी, एक जब अगर गवर्नमेंट बोला नेम चेंज नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली नेम अलॉट कर दो, आइडेंटिकल नेम हो तो। सेकेंड उसने बोला राइट इशू का पीरियड कम कराओ। थर्ड उसने बोला इन लोगों को पीरियडिक रिजल्ट्स लाने बोलो कुछ कंपनी को। फोर्थ उन्होंने बोला कंपनी के बेटर केसेस रिड्रेसल के लिए एनसीएलिटी के बेंचेस बढ़ाओ। कुछ उन्होंने बोला कुछ को लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से बाहर रखो। फिर उन्होंने बोला कि बेनिफिशियल ओनरशिप का जो डिक्लेरेशन है वो भी आप सब पे एप्लीकेबल, जैसे 90 सेक्शन 90 डील्स विद एसबीओ, जिसमें गवर्नमेंट का पास पावर है कि वो कुछ कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकता है, लेकिन वो सिमिलर पावर सेक्शन 89 में नहीं है। 89 इज ऑल अबाउट बेनिफिशियल ओनर डिक्लेरेशन। तो बोला सेक्शन 89 में भी वो पावर दे दो ताकि बेनिफिशियल ओनर जो डिक्लेरेशन देते हैं हम लोग 1-2 शेयर होल्डिंग के लिए, वो भी पावर हम लोग के पास रहे। व्हाई द रीजन बीइंग कि बेनिफिशियल ओनर का पावर देना जरूरी हुआ क्योंकि गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ इन फ्यूचर कुछ आईएफएससी सेंटर बनेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जहां पे फॉरेन फंड्स होंगे, आइडियाज वगैरह इशू होंगे, जीडीआर वगैरह आएंगे। तो देन दे आर सेइंग कि दीज कंपनी में इशू और दीज कॉर्पोरेट्स में इशू डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अकॉर्डिंगली इट विल बी रिक्वायर्ड कि उनके नाम एज अ बेनिफिशियल ओनर नहीं एंटर होंगे, एज अ रजिस्टर्ड ओनर एंटर होंगे, बेनिफिशियल ओनर कोई और ही होगा। तो टू प्रमोट दिस वी शुड गेट अ पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, कि अगर उसको लगे तो वो सेक्शन 89 के कंप्लायंस से भी किसी को एग्जेम्पशन दे दे। सेक्शन 89 में क्या फाइल होते हैं, वो एमजीटी 4, 5, 6 याद है, फॉर्म होते हैं एमजीटी 4, 5 and 6. These are related to exemption. So this is what we have tried our best to, in short, because this is not so lengthy amendment act, in short to discuss about this. And this act has come on the recommendation of company law committee. The company law committee 2019 में फॉर्म हुआ, बट आते थे देर क्यों हुई, क्योंकि कोविड लॉकडाउन हमको मार्च से लेके पूरा सितंबर तक हॉल्ट कर दिया। But nonetheless it's a major welcome. So this is in short all about the Companies Amendment Act 2020. While at the same time I was trying my best to look into the chat box, and I understand that I have replied to almost all the questions because people do raise about 129A. तो मैंने बता दिया है कि ये periodic results के बारे में है। किसी ने पूछा बेनिफिशियल ओनरशिप वाला कंसेप्ट, तो मैंने बता दिया कि आप याद रखिए सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप में एग्जेम्पशन नहीं है, उसका ऑलरेडी सेक्शन 90 में गवर्नमेंट के पास पावर है। 89 में जो बेनिफिशियल ओनर होते हैं एमजीटी 4, 5, 6, उसके लिए भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल गया। तो विद दीज वर्ड्स वी कंक्लूड द सेशन ऑन द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. If anybody have any query, please do write, please do raise your query here, that so that we will be able to answer it. Somebody has raised that kindly explain changes in the related party transaction, and the another one is the beneficial owner not clear. Beneficial owner, as I told you na, that we are not going to discuss beneficial owner today. What in short I told you कि beneficial owner क्या होता है ना, जब कोई कंपनी में हम शेयर्स अपने नाम पे रखें तब तो I am the original owner, but suppose करिए किसी कंपनी को शेयर होल्डर बनना है एंड कंपनी ने मुझे बोला कि एक शेयर आप मेरे बदले में होल्ड करो। When I am holding one share on behalf of that company, I am the registered owner and that company is the beneficial owner. तो इन केसेस में क्या होता है ना, लॉ में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हम एक्चुअल में ओनर नहीं है, हम आपके रजिस्टर्ड ओनर है।
और उस कंपनी को डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि रियल ओनर हम हैं, पर्दे के पीछे है कौन। तो दैट इज व्हाट द बेनिफिशियल ओनरशिप इज कंसेप्ट। तो वो जो बेनिफिशियल ओनर का कंसेप्ट चल रहा है, मिनिस्ट्री ने बोला कि वो बेनिफिशियल ओनर के कंसेप्ट में एटलीस्ट देयर नीड्स अ पावर विद द एमसीए कि जब उसको लगे कि कुछ कुछ कंपनियों को वो एग्जम्प्ट कर दे इस रिक्वायरमेंट से कि 184, 185 ये सब का एग्जम्पशन दे, तो उन लोगों के ऊपर एग्जम्पशन का वो पावर आप मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करें। So that is the beneficial owner. Amlan is asking 129 filing. Amlan 30 days the filing period और वो अभी रिपोर्ट डे पीरियोडिक है, अभी नहीं पता कि क्वार्टरली होगा कि हाफ ईयरली होगा। So nothing is clear and no form number is out. It will be out once the clear law picture is there. किसी ने पूछा है कि amendment in CSR is only about carry forward of excess amount. Yes, it is only about carry forward. बिकॉज ऑलरेडी लॉ में अभी ऑर्डिनेंस के थ्रू एक पावर आया था कि जब आप कोई अमाउंट अनस्पेंट है तो उसको भी कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो लॉ बोलता है, ये कमेटी बोला जब अनस्पेंट अमाउंट को आप कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो तो एक्सेस स्पेंट अमाउंट को भी कैरी फॉरवर्ड करना ही अलाउ करना चाहिए। सो दैट इज व्हाट इज अलाउड। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में किसी ने पूछा कि व्हाट इज द रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एडजुडिकेशन आ गया। वहां पर पहले क्या था, that punishable with the imprisonment for a term of this and this and which shall be liable for a penalty which may extend to 25 lakh. now उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया है कि there should be a straight away penalty up to a 25 lakh. that means वो punishable वर्ड हटा दिया है, imprisonment वाला। तो अब पेनल्टी आ गया तो इसका मतलब आपका सीधा सीधा वो मैटर एडजुडिकेशन होगा। आप जाइए आरओसी या उसके इक्विवेलेंट ऑफिसर को अपील करिए, यू विल बी अलाउड कि आप एक टोकन अमाउंट ऑफ पेनल्टी जमा करो, केस डिस्पोज ऑफ। इंस्टीड ऑफ वो आपके ऊपर पनिशमेंट के लिए मैटर चलते रहता, हियरिंग होते रहता, तो इट हैज बिकम अ मैटर ऑफ एडजुडिकेशन, राइट। सो आई होप दैट एपी यू आर क्लियर नाउ, बिकॉज आप अपने मोबाइल का नाम एपी रख रखे हो। Somebody has raised a query that in my unlisted company MGT not is filed for taking loan. Is there any way to file MGT 14 now? It's a practical question, so I will answer yes, there is a way to file right now also under the CFSS scheme जो अभी चल रहा है 31 दिसंबर तक एक्सटेंड हो गया है। आप लोग को भी अगर याद हो तो CFSS पे हम लोगों ने एक सेशन लिया था, मैंने बोला था खुद ही कि गंगा है नहा लो जितना भी पुराना पाप है। तो आप CFSS स्कीम में फॉर्म फाइल कर दीजिए, लेकिन सिंस आपका बहुत पुराना है तो पहले आपको एक कंडोनेशन भी फाइल करना पड़ेगा और फिर MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन फीस आपका नॉर्मल लगेगा, मतलब जो फीस अभी इतना ज्यादा लगता वो आपका नॉर्मल ही लगेगा। किसी ने पूछा कि सर इफ आई हैव अ कंपनी हैव अ कलेक्टिव फंड ऑफ ₹2 crore इन द CSR फंड ऑफ लास्ट 5 years, हाउ इट विल बी ट्रीटेड। ये क्या होता है टू कलेक्टिव फंड, क्या चीज का 2 करोड़ का? मींस यू हैव डिपॉजिटेड इट, क्या है वो आपने खर्चा नहीं किया, क्या कर रखा है। और कैसे कोई फंड आपको रखने का जरूरत नहीं है कोई CSR फंड में, या तो खर्चा करिए या कुछ रखिए मत। किसी ने फिर पूछा है कि 129A में कौन सी कंपनी कवर्ड होगी। तो मैंने आपको बताया अभी तक लॉ ने बस इतना ही बोला है कि certain class of unlisted companies, that means you do not know whether it's a private, whether it's a public, whether it's a turnover basis. Yes, obviously private company will not be straight away will come into this. Initially it will start from the public, gradually it may extend to the other companies. Right issue I already discussed, that time period has been reduced for the right issue. Means अभी जो 15 days से लेके 30 days का जो right issue period है, गवर्नमेंट बोलता है उस 15 days को भी रिड्यूस करो। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है, सपोज करो मेरी प्राइवेट कंपनी है, राइट इश्यू लाया, हम लोग 4 मेंबर है, कल इश्यू खोला, हम चारों पैसा डाल दिया आज ही, अब हम क्यों 15 दिन तक खोल के रखें इसको? व्हाट इज द लॉजिक? हम चारों ने आज ही सब्सक्राइब कर दिया। So that is what the law says, that it should be reduced lesser than 15 days. क्यों minimum period 15 days वाला reduce करें। So with this we complete here our next session. Tentatively we are planning on the insider trading and we'll keep the timing again back to the normal जो 6:30 हम लोग करते थे, so that everyone will be comfort with that time period. It's a Sunday, so the time period will be 6:30 in the evening and the topic will be the insider trading. So with these words,
Once again, I thank you for joining us. For any query, you may please call sir or SMS sir or me. We will definitely answer all your queries, or we'll try our best to answer your queries. Thank you so much. Thank you once again. So taking a leave here. Bye-bye to everyone.